ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 56 of the KishkindhaKandam, which is 24 verses. Praising providence out of joy at the prospect of deriving sustenance for a long time on seeing a band of monkeys, even as it emerged from a cave of the Vindhyan range, on hearing their noise, the vulture king Sampati, the elder brother of Jatayu, expresses determination to eat them all up, one after another. Depressed to hear the vow and declaring Jatayu, who had met his death at the hands of Ravana in the service of Sita while trying to save her from the clutches of Ravana, Sampati requests Angada to help him slide down from his high post, adding that his wings have been burnt, unable to fly. आज हम किष्किंधा कांड के षष्ठ पंचाश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 24 श्लोक हैं। संपाति से वानरों को भय उनके मुख से जटायु के वध की बात सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से अनुरोध करना। उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायं गिरिस्थले हरयो गृध्रराजश्च तं देशम् उपचक्रमे सम्पातिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहंगमः भ्राता जटायुषः श्रीमान विख्यात बल पौरुषः। पर्वत के जिस स्थान पर वह सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गृध्रराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। The king of vultures too approached the same plateau on which all the aforesaid monkeys for their part had sat down to starve themselves to death. He was no other than a long-lived and glorious bird, the brother of Jatayu, known by the name of Sampati, whose strength and prowess was widely known. Kandarat abhinishkramya sa Vindhyasya महागिरेः उपविष्टान् हरीन् दृष्ट्वा हृष्टात्मा गिरम् अब्रवीत्। महागिरी विंध्या की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहां बैठे हुए वानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वह इस प्रकार बोले। Emerging all of a sudden from a cave of the great Vindhya range and delighted in the mind to observe the monkeys seated there, he spoke as follows. विधिः किल नरं लोके विधानेन अनुवर्तते यथा अयं विहितो भक्ष्यचिरात् मह्यम् उपागतः परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां मृतम् उवाच एतत् वचः पक्षी तान् निरीक्ष्य प्लवंगमान्। जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्म अनुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात ये भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ये मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमश भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देखकर कहा। Even as in this world the fruit of a man's past actions accrues to him according to the law of karma, this food in the shape of so many monkeys, which was ordained for me, has come of its own accord after a long time. I shall successively eat up one after the other of all these monkeys seated in line, even as they fall dead successively due to starvation. The bird uttered the foregoing words on perceiving the monkeys. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः अंगदः परमायस्तो हनुमन्तं अताब्रवीत्। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वह हनुमान जी से बोले। Greatly perturbed to hear the aforesaid utterances of that bird, who was covetous of food, Angada presently spoke to Hanuman as follows. पश्य सीतापदेशेन साक्षात् वैवस्वतो यमः
इमं देशाम् अनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये। देखिए, सीता के निमित्त से वानरों की विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्य पुत्र यम इस देश में आ पहुंचे। For bringing destruction to the monkeys under the pretext of Sita, Yama, the god of retribution, son of the sun god, has bodily come to this region. रामस्य न कृतं कार्यं न कृतं राजशासनं हरिणाम् इयम् अज्ञाता विपत्तिः सहसा आगता। हम लोगों ने जो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया है और ना राजा की आज्ञा का पालन ही, इसी बीच वानरों पर ये सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी। The purpose of SriRama has not been accomplished, nor has the king's injunction been carried out. In the meantime, this unforeseen calamity has overtaken the monkeys all of a sudden. वैदेह्याः प्रियकामेन कृतं कर्म जटायुषा गृध्रराजेन यत् तत्र श्रुतं वस् तद् अशेषतः। विदेही कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गृध्रराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था, वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। The service rendered at Panchavati by Jatayu, the king of vultures, who was keen to oblige Sita, has been heard of by you in its entirety. तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योनि गतान्यपि प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान् यथा वयम्। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों को योनि में ही क्यों ना उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। All living beings, even those born in the subhuman species of birds and beasts, do what is pleasing to Sri Rama, even laying down their life if necessary, as we are doing. अन्योन्यम् उपकुर्वन्ति स्नेह कारुण्य यंत्रिताः ततः तस्योपकारार्थं त्यजत आत्मानं आत्मना। शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं, अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। Bound by love and compassion for him alone as manifested in the form of all living beings, do people render good offices to one another. प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्ते परिश्रान्ता वयं संत्यक्त जीविताः। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन ना कर सके। Therefore, lay down your life by yourselves for the sake of his service. Indeed, a kindly act was done to Sri Rama in the shape of laying down his life in his service by Jatayu, who knew what is right. कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म न च पश्याम मैथिलीं स सुखी गृध्रराजस्तु रावणेन हतो रणे मुक्तश्च सुग्रीव भयात् गतश्च परमां गतिम्। गृध्रराज जटायु ही सुखी है जो युद्ध में रावण के हाथ में से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वह सुग्रीव के भय से युक्त है। We too have ventured on difficult roads for the sake of Sri Rama and feel thoroughly exhausted, but we have not found out Sita, even though we have finally taken leave of our lives. Blessed is that king of vultures in that he was slain in an encounter by Ravana, nay, was rid once for all from the fear of Sugriva, who was evidently the overlord of the entire subhuman creation and has attained the highest state by the grace of Sri Rama. जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च हरणेन च वैदेह्याः संशयं हरयो गताः। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेही कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। The monkeys have fallen into danger through the death of King Dasharatha, the destruction of Jatayu, and the abduction of Sita. राम लक्ष्मणयोर वासम अरण्ये सह सीतया राघवस्य छु बाणेन वालिनश्च तथा वदः।
राम कोपात् अशेषाणां रक्षसां च तथा वधं कैकेय्या वरदानेन इदं च विकृतं कृतम्। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री गुरुनाथ जी ने के बाण से वाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई हैं। Know the sojourn of Sri Rama and Lakshmana in the forest with Sita, and even so the destruction of Vali encompassed by an arrow of Sri Rama, and similarly the prospective extermination of all the ogres through the wrath of Sri Rama. All this evil had to be brought about by the boon granted by Dasharatha in favor of Kaikeyi. तत् सुखम् अनुकीर्तितं वचो भुवि पतितांश्च निरीक्ष्य वानरान् वृषचकितमतिः महामतिः कृपणम् उदाहृतवान् स गृध्रराजः। वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुखमय वचनों को सुनकर और सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और वे दीन वाणी से बोलने को उद्यत हुए। Greatly bewildered in mind to hear the aforesaid doleful cries uttered by the monkeys and to perceive them tumble down on the ground, the highly intelligent Sampati, the king of vultures, spoke as follows in a piteous tone. तत्तु श्रुत्वा तथा वाक्यम् अंगदस्य मुखोद्गतम् अब्रवीत् वचनं गृध्रः तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गीत ने उच्च स्वर में से इस प्रकार पूछा। Nay, hearing the speech that had escaped from the lips of Angada as above, the sharp-beaked vulture Sampati spoke as follows, making a loud noise. को अयं गिरा घोषयति प्राणैः प्रियतरस्य मे जटायुषो वदं भ्रातुः कंपयन्ति मे मनः। ये कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। Who is the being who proclaims in so many distinct words the death of my brother Jatayu, who was dearer to me than life itself, causing my heart to tremble as it were with this heart-rendering news? कथम् आसीत् जनस्थाने युद्धं राक्षसगृध्रयोः नामधेयम् इदं भ्रातुः चिरः अद्य मया श्रुतम्। जन स्थानों में राक्षस का घृत के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था, अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। How did an encounter take place between an ogre and the vulture in Janasthana? This name of my younger brother has been heard of by me after such a long time today. इच्छेयं गिरिदुर्गाच्च भवद्भिः अवतारितुं यवीयसो गुणज्ञस्य श्लाघनीयस्य विक्रमैः अतिदीर्घस्य कालस्य परितुष्टो अस्मि कीर्तनात् तद् इच्छेयम् अहं श्रोतुं विनाशं वानरषभाः। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा की योग्य था। दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूं कि पर्वत के उस दुर्गम स्थान में आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। Nay, with your help, I wish to bring myself down from the mountain citadel on which I am perched. I am highly gratified with the praises heard after a very long time of my younger brother Jatayu, who appreciated the virtues of others and was deserving of praise because of his exploits. जटायुषः तस्य जनस्थान निवासिनः तस्यैव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्। मेरा भाई जटायु जो जन्म स्थान में रहता था, गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठः गुरुजन प्रियः तूर्यांशु
दग्धपक्षत्वात् न शक्नोमि विसर्पितुम् इच्छेयं पर्वतात् अस्माद् अवतर्तुम् अरिन्दमाः। शत्रुदमन वीरों, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। Therefore, leaders of monkeys, I long to hear about the destruction of my younger brother Jatayu, who lived in Janasthana. Again, how did King Dasharatha, a friend of the self-same brother of mine, whose beloved eldest son is SriRama, the favorite of his elders, meet his end? My wings have been scorched by the rays of the sun. I cannot fly about. All the same, I wish to descend from this eminence, O tamers of your foes. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 56 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 56 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद. धन्यवाद।